हेलो डे स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आम कंप्यूटर 25 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करवा। यहाँ आम प्रैक्टिस सेट हे प्रतिदिन आम गोटे प्रैक्टिस सेट आम डिस्कस करवा। यहाँ आम कंप्यूटर जिते भी चैप्टर अच्छी सबू चैप्टर क्वेश्चन अणाई। तो यहाँ तुम एग्जाम ओरिएंट प्रोस्पेक्टिव बहुत काम देव से समस्ते भिडटा आरंभ शेष पर्यटन देख सबू चैप्टर क्वेश्चन अच्छी। तो भिडटा आरंभ करने पूर्व समस्ते भिड टी लाइक कर दियो एवं निज फ्रेंड मानक शेयर कर दियो। तो चलो देखिबा आज फास्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट इन द वर्ल्ड। तमने कौन इंटरनेट रो फादर पचारि। तो समस्ते जानूथिबो जो माने कंप्यूटर पढ़िछ इंटरनेट माने कौन। इंटरनेट माने होची इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, सारा विश्व को जी कनेक्ट करि पारे। आमे इंटरनेट माध्यम रे वर्तमान अमेरिका रे कौन हैला किंबा रूसिया रे कौन हैला आमे जानि पारुछु। कहा माध्यम रे सेटा इंटरनेट माध्यम रे केवल संभव होची। तो इंटरनेट रो फादर होचंती भिंड सेफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर होची ऑप्शन डी, फादर ऑफ इंटरनेट इज भिंड सेफ। तापरे जीवा आमे 2 नंबर क्वेश्चन को, व्हाट डज कंप्यूटर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी फिशिंग मीन्स। तो एठारे कंप्यूटर सिक्योरिटी क्वेश्चन आसी। तो फिशिंग माने कौन पचारि। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैनिपुलेटिव अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इनफॉरमेशन। तामाने कौन तुम मोबाइल रे जो इनफॉरमेशन अच्छी तुम बैंक पासवर्ड है, एटीएम पासवर्ड है, तो हैकर माने कौन करेंगे तुम मोबाइल को एमती सॉफ्टवेयर माने छाड़िबे जहाँ माध्यम कौन तुम मोबाइल को हैक करने ताकू आम कौन कहिबा फिशिंग कहिबा। तो राइट आंसर होची कौन ऑप्शन बी, मैनिपुलेटिव अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इनफॉरमेशन। सेंसिटिव माने होची गोपनीय इनफॉरमेशन जोटा आम अन्य काहाकू देबानी। जेमिति सेंसिटिव इनफॉरमेशन कौन हो पार, एटीएम रो तुम पासवर्ड हो पार, तुम फोन पे रो जो यूपीआई जो नंबर दौच सेटा, तो ताकू आम सेंसिटिव इनफॉरमेशन कहि परिबा। बुझि पारलो सेटा होची कौन फिशिंग आम कहि परिबा। तो देखि पारथुवा इमेज जो हैकर माने थिबे से माने कौन तुम मोबाइल को सेटा सेंड करिवे। तापरे देखिबा आम थर्ड क्वेश्चन, इफ एन डिवाइस आर कनेक्ट टू इच अदर। एन डिवाइस माने बहुटे डिवाइस माने बहुटे कंप्यूटर परस्पर मध्य कौन कनेक्ट होइछि इन ए बस टोपोलॉजी रे, देन द नंबर ऑफ केबल रिक्वायर्ड टू कनेक्ट देम इज 1। बस टोपोलॉजी रे कौन होता है गोटे केबल आमर दरकार होता है, समस्त केबल को आम कौन कही था। तो देख फास्ट देखि नियो आमर टोपोलॉजी। देख टोपोलॉजी होची बहुत प्रकार। टोपोलॉजी माने कौन देख जमीती गोटे बैंक है, बैंक रे गोटे मेन सर्भर थी सहित कौन सब कंप्यूटर जाकर कनेक्ट होती, कि गोटे कंपानी है कौन कंपानी रे गोटे मेन सर्भर थी गोटे मुख्य कंप्यूटर थी सहित कौन कंपानी रे जिते भी एम्प्लॉय थे से मैंने जो कंप्यूटर व्यवहार करते सब कंप्यूटर सहित कौन से मेन कंप्यूटरटा कौन कनेक्ट हो। तो टोपोलॉजी होची बहुत प्रकार। जमीती फास्ट होची हमर स्टार टोपोलॉजी। स्टार माने कौन तारा जमीती थाए आमर मिडिल रे कौन थाए आमर जो मेन कंप्यूटरटा थाए एवं सब साइड रे कौन स्टार भलिया कौन लंबी थाए से आम स्टार टोपोलॉजी कहबा। तापर हैला बस टोपोलॉजी, बुझि पारलो। तापर हैला रिंग, रिंग देख गोटे सर्किल शेप रे अछि। तापर मेश, मेश कौन सब कंप्यूटर सब समस्त सहित कौन कनेक्ट होइछि। ट्री माने कौन तलकु तल अछि। तापर हाइब्रिड टोपोलॉजी अछि हैला। तो बहुत टोपोलॉजी अछि। तो क्वेश्चन कौन थिला, क्वेश्चन थिला जदि आमर जो बस एठारे बस टोपोलॉजी रो क्वेश्चन, बस टोपोलॉजी रे कौन होइछि एनटी डिवाइस बहुटे डिवाइस कौन कनेक्ट होइतबा गोटे केबल रे। तो से केबल रो ना कौन हमको पचारिछि। तो देखि नियो एटा होछि कौन बस टोपोलॉजी। देखि पारथबो इमेज मिडिल रे गोटे कौन जाइछि गोटे केबल जाइछि एवं एठारे नोड, नोड माने कौन नोड माने होछि सब कंप्यूटर को गोटे गोटे आमे नोड एठारे कहिबा। तो बहुटे कंप्यूटर कौन कनेक्ट होइछि। तो गोटे तार जाइछि जेमिति देखिथिबो बैंक मान को देखिथिबो केबल माने लंबी थिबो, जो जी मैनेजर थिबो बैंक रु ता कंप्यूटर कौन सब कंप्यूटर को केबल लंबी थिबो। बुझि पारलो। तो गोटे केबल जे थिबो से केबल माध्यम रे बहुटे नोड बा कंप्यूटर कनेक्ट होइतिबो ताकू आमे बस टोपोलॉजी कहिबा। तो से केबल को आमे कौन कहि थाउ, केबल को कहि थाउ बैकबोन बोली कहि थाउ। तो ऑप्शन सी हे जिवो कौन राइट आंसर बैकबोन। बुझि पारलो।
तो बस टोपोलोजी रे जो मिडिल रे गोटे तार जाइए केबल जाइए ताकू आम बैकबोन बोली कही थाउ। नेक्स्ट देखिबा आम 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ए टेक्स्ट फील्ड कैन बी। एटा आम डाटाबेस मैनेजमेंट क्वेश्चन एसएस क्वेश्चन। तो मैक्सिमम लेंथ टेक्स्ट होची आमर 255 टी कैरेक्टर। तो मैक्सिमम कौन 255 टी कैरेक्टर आम फिल करि परिबा। नेक्स्ट देखिबा आम 5 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन एमएस ऑफिस। देख आम एमएस ऑफिस पचारि आमर मिनिमम मैक्सिमम आम केते जूम करि परिबा। तो ये क्वेश्चन अच्छी एमएस ऑफिस जदि एमएस वर्ड देखा तो केते हेबो 10 रु 500% है। एमएस वर्ड रे आम 10 रु 500% जूम करि परिबा एवं एमएस एक्सेल एवं एमएस पावर पॉइंट रे 10 रु 400% आम जूम करि परिबा। जूम तो समस्त जानी थिबो। देखो वर्तमान स्क्रीन जदि आम जूम करिबा स्क्रीन को देखो ये बर्तमान जूम होची तो आम जूम कहि परिबा। तो राइट आंसर हो कौन ऑप्शन बी मिनिमम 10% जूम एवं मैक्सिमम 500% आम जूम करि परिबा। बुझेला। आउ डिफॉल्ट जूम केते थाए 100% डिफॉल्ट जूम थाए। नेक्स्ट देखिबा आम 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट रोल डज ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्ले ऑन द इंटरनेट। आमर जो इंटरनेट नहीं सॉरी इंटरनेट अच्छी आमर जो इंटरनेट अच्छी सेठारे जो आमर सीएमएस एठारे गोटे फुल फॉर्म मन रख सीएमएस रो फुल फॉर्म होची कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम रो काम कौन। तो राइट आंसर होची ऑप्शन ए फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड कंटेंट क्रिएशन। देखो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम माने कौन देख यहाँ हूँ जदि आम गोटे वेबसाइट डेभलप करने को चाहूँ तो आम गोटे मनकर वेबसाइट रे आम कौन कंटेंट देवा। कंटेंट माने कौन इंटरनेट रे आम गोटे वीडियो अपलोड कला से वीडियो को मध्य कंटेंट कहबा। आम फेसबुक रे कौन गोटे फोटो अपलोड कला से फोटो को मध्य कौन कहबा गोटे आम कंटेंट कहबा। क्या गोटे ईमेल सेंड कला से ईमेल को आम कौन कहबा कंटेंट कहबा। तो कौन सी टेक्स्ट है कौन सी पिक्चर है कौन सी वीडियो है सब गोटे हूँ कौन कंटेंट। तो आम जदि कौन सी गोटे नुआ वेबसाइट टे डिजाइन करुचु तो आमको कौन कंटेंट मैनेजमेंट कौन आवश्यकता पड़ो। तो कंटेंट मैनेजमेंट कौन करे जिते भी आमर वेबसाइट अच्छी आमर ईमेल को आमर फेसबुक जो सोशल मीडिया नेटवर्क अच्छी आमर सोशल नेटवर्किंग को बिजनेस रो जहाँ भी अच्छी सबू कौन करे से कंट्रोल करें सेटा हूँ कौन आमर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो राइट आंसर कौन हो राइट आंसर हो ऑप्शन ए फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड कंटेंट क्रिएशन। तापर नेक्स्ट देखिबा आमे 7 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मालिशियस प्रोग्राम डू नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली। देख क्यों मालिशियस प्रोग्रामटा ऑटोमेटिकली रिप्लेट होई न थाई। देखो गोटे क्वेश्चन आसुची आमर मेलिशियस प्रोग्राम। मेलिशियस प्रोग्राम माने कौन जो मालवेयर माने अच्छी मेलिशियस प्रोग्राम माने होची एमिति गोटे एमिति गोटे वेबसाइट डिजाइन कराई थिबो जार काम होची कौन आम यूजर मानक केमि ठकिबा एवं से कौन पैसा आम आदाय करवा बा अन्यर क्षति पहुँचापी जोटा डेभलप कर आम मालिशियस सॉफ्टवेयर बा मालवेयर बोली कही थाउ। बुझिपार। तो जिते भी अच्छी जम्बी है भाइरस है वर्म है ट्रोजन है हूँ मालिशियस प्रोग्राम रो कौन एग्जांपल। बुझिपार। तो मालिशियस प्रोग्राम कौन जो प्रोग्रामटा जो सॉफ्टवेयरटा डिजाइन करा जाए इंटेंशनली कौन डिजाइन कराए अन्यर क्षति पहुँचापी ताकू आम मालिशियस सॉफ्टवेयर बोली कही थाउ। तो बहुत प्रकार मालिशियस सॉफ्टवेयर अच्छी आमर कंप्यूटर सिक्यूरिटी चैप्टर अच्छी भाइरस अच्छी रैनसमवेयर अच्छी रूटकिट अच्छी वर्म्स अच्छी ट्रोजनस अच्छी एडवेयर अच्छी स्पाइसवेयर अच्छी। बुझिपार। तो रेप्लिकेट माने कौन रेप्लिकेट माने जदि तुम कंप्यूटर को जम्बी किंबा भाइरस किंबा वर्म पले आसबे कौन से माने निजे निजे तांकर वंश विस्तार करेंगे किंतु ट्रोजन हॉर्स ताहा करे नाही। बुझिपार। ट्रोजन हॉर्स कौन ट्रोजन हॉर्स होची देख ट्रोजन हॉर्स होची एमिति गोटे सॉफ्टवेयर जोटा आम कंप्यूटर को आपे आपे आसे नाही। बुझिपार। तो देख ट्रोजन हॉर्स कौन आम देखीदेबा।
A Trojan horse is a type of malicious software dash disguise itself a legitimate software to track a user. Trojan horse କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯିଏ କହିଥାଏ କ'ଣ ଯେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ'ଣ କରିବ ଯେମିତି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ହେଲା ଜାଣିଥିବ ଆମର ଭାଇରସ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାନେ ଥାଏ ତ ଟ୍ରୋଜନ୍ ହର୍ସ ସେ ଟାଇପ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ସେ କ'ଣ କହିବ ଯେ ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେତେ ବି ଭାଇରସ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ସେ ଠିକ୍ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତୁମ ସବୁ କ'ଣ ହ୍ୟାକ୍ କରିନେବ ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଟ୍ରୋଜନ୍ ହର୍ସ ବୁଝିପାରିଲ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲା କେଉଁଟା ରେପ୍ଲିକେଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟ୍ରୋଜନ୍ ହର୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଦେଖ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର କେଉଁଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିଛ ସେଇଟା କେଉଁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିଛି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଲାଗିଛି ଯଦି ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିବା କ'ଣ iOS ଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣୁଛୁ ତ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଛି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆପୁଲ୍ ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି ୱାନ୍2 ଅଛି ଲିନକ୍ସ ଅଛି ତ ଏସବୁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନେ ରଖିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ପଠାଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ କରେ ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ଯେତେ ବି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଫାଇଲ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥାଏ CPU ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଛି ତାହାକୁ କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥାଏ ତ ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆମର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କେଉଁଟା କରିନଥାଏ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ନେଟୱାର୍କିଂ ବୁଝିପାରିଲ ତ ନେଟୱାର୍କିଂ କରିନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ MICR ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ MICR ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ତ MICR କ'ଣ ଜାଣିଥିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ MICR ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମେସିନ୍ଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ମାନେ ଥାଏ ଚେକ୍ର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ରିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିଥାଉ ବୁଝିପାରିଲ ଏ ମେସିନ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ଦେଇଦେବ ସେ କ'ଣ ରିଡ୍ କରିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦି ଡିଫଲ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଇନ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ର ଡିଫଲ୍ଟ ଭ୍ୟୁ କେଉଁଟା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଏକ୍ସେଲ୍ର ଡିଫଲ୍ଟ ଡିଫଲ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ତ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ନର୍ମାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଛି पेज ब्रेक प्रिव्यू अच्छी पेज लेआउट अच्छी कस्टम व्यू अच्छी बुझिपार यहाँ आम एक्सेल व्यू टैब रे अच्छी तो आमर डिफॉल्ट बा ऑटोमेटिक व्यू अच्छी नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट देखिबा आमे 11 नंबर क्वेश्चन हु इज द इन्वेंटर ऑफ एबीसी कंप्यूटर जो आमर एबीसी कंप्यूटर अच्छी ताहार इन्वेंटर किए करथिले तो राइट आंसर होची जॉन विंसेंट एटनसन एंड क्लिफोर्ड ई बेरी तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी जॉन विंसेंट एटनसन एंड क्लिफोर्ड ई बेरी एटा होची कोन एबीसी कंप्यूटर रो फाउंडर करथिले तो देखि पारथबो जो एबीसी कंप्यूटर थिला एटा तुमको देखाइ दो टेबल परी किंतु एटा टेबल नुह ए टोटल होची कंप्यूटर एभे कंप्यूटर कोन एडवांस टेक्नोलॉजी हेलानी कंप्यूटर साइज बहुत छोटो किंतु आगरु जो गोटे पूरा विशाल गोटे घर रे कोन गोटे घर रो साइज हेडे हेडे साइज थिला बुझ पारुछ तो बहुत विराट विराट साइज रो कंप्यूटर माने थिला। तो नेक्स्ट देखिबा हमें 12 नंबर क्वेश्चन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बुझिपार आमर कंप्यूटर टोटाल 5टी जेनेरेशन अच्छी तो से 5टी जेनेरेशन रे जो क्यों जेनेरेशन रे क्यों कंपोनेंट लगी तुम मन रख तो आमर जो सेकंड जेनेरेशन थिला सेटा लगी कौन ट्रांजिस्टर बुझिपार तो ट्रांजिस्टर हूँ आमर सेकंड जेनेरेशन रो मेन कंपोनेंट और बाकी देखा बोले फास्ट जेनेरेशन रे कौन वैक्यूम ट्यूब लगी सेकेंड तो ट्रांजिस्टर आम डिस्कस करला थर्ड जेनेरेशन रे कौन इंटीग्रेटेड सर्किट एवं फोर्थ जेनेरेशन रे कौन VLSI जोटा हूँ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और फिफ्थ जेनेरेशन हूँ कौन ULSI ताने हूँ कौन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तो टोटाल जो 5टी जेनेरेशन अच्छी क्यों जेनेरेशन रे
କେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା ଏହା ମନେ ରଖିବ। ଏଠାରୁ କ'ଣ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ କହୁଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ୍ ନେଟୱାର୍କ। ବୁଝିପାରିଲ, ତାମାନେ କ'ଣ, ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ କନେକ୍ଟ କରି ରଖିଛି, ସବୁ ଦେଶକୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ କ'ଣ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛି, କନେକ୍ଟ କରିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ବୁଝିପାରିଲ, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ, ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ, ସବୁ ମୋବାଇଲକୁ ସେ କ'ଣ କନେକ୍ଟ କରିଛି, ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା। ହ୍ୱାଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା ମାନେ କ'ଣ, ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ କିଏ ବାହାର କରେ। ବୁଝିପାରିଲ, ଦେଖ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଏ ତାମାନେ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଇନପୁଟ୍ ଦେନା, ସେ ସେନା CPU କ'ଣ କରିବ, CPU ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ସେଇଟା ବାହାର କରିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସିଂର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆମେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଟାଇପ୍ କନା, ସେଇଟା କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆମେ ଯଦି କିବୋର୍ଡ଼ରେ 5 ଟାଇପ୍ କନା ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ 5 ବାହାରି ଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ରୋସେସିଂ। କିଏ ତାମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ତ ପ୍ରୋସେସିଂ କଲା ପରେ ଯାଇକରି ଆମ ଆଉଟପୁଟ୍କୁ ଆସିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, WWW ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାରଗନ୍ WWW ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍। ଦେଖ ତିନୋଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ମାନେ ଜାଣିଥିବ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି 4ଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଛି ତ ଲାଷ୍ଟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍ ୱାର୍ମ। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍, ତିନୋଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ୱାର୍ମ, WORM, ୱାର୍ମ। ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ IPv4 ଡାଟାଗ୍ରାମ। IPv4 ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭର୍ଜନ୍ 4। ତ ସେଠାରେ କେତେ ବାଇଟ୍ ତାମାନେ ଅଛି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 65,535। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭର୍ଜନ୍ 4 ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ, 65,535 ବାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଆଲାଉଜ୍ ୟୁ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଏଇଟା MS ଆମର ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ସବୁ ପେଜ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଆମ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ସବୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ତ କେଉଁଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଆଲାଉ ୟୁ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାନେ ଅଛି ଗୋଟେ 2 3ଟି, ଆମେ 2 3ଟି ଆମେ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ତ ଆମେ କେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ କିର ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ରାଗ୍ ଇ ସ୍ଲାଇଡ୍। ଆମେ ଅଲ୍ଟକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଏବଂ ସବୁ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଡ୍ରାଗ୍ କରିବା ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସବୁ ସାଇଡ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ସି, ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ରାଗ୍ ଇ ସ୍ଲାଇଡ୍। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ତୁମେ ଅଲ୍ଟକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବ ଏବଂ ସବୁ ସାଇଟ୍କୁ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, HTTP ତାପରେ www.google.com ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ତ ଏଠାରେ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଏବଭ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି google.com। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ google.com ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, google.com। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଆମର ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେଉଁ google.com ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆମର ଅଛି, এই ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, এই ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ HTTPS ଅଛି, ହାଇପରଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସିକ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ wwwକୁ ସବ୍ ଡୋମେନ୍ କହିବା। ଏବଂ ଦେଖ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ .com, ଯେମିତି ଏଠାରେ google.com ଥିଲା, ତ ଯେଉଁ ନାଁଟା ଥିବ ଆଉ .com ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, dash is the weakness in a system that give threat the opportunity to compromise asset। ୱିକନେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ହେଲା ସେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ଏସେଟ୍। ବୁଝିପାରିଲ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଭଲନେବିଲିଟି ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ, ଭଲନେବିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ, ହ୍ୟାକର ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ୱିକନେସ୍ ଆସିଲା, ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଟାକ୍ କରିବେ ହ୍ୟାକର ମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ,
ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଭଲନାବିଲିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ୱିକନେସ୍ ଭଲନାବିଲିଟି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, which of the following display the bottom of changing textile alignment and size। ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି ତାର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କେଉଁ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କରିବା, ଟେକ୍ସଟର ଆମେ ସାଇଜ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସେଇଟା କିଏ କରିବ, ସେଇଟା କରିବ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଡ୍ରଇଂ ଟୁଲବାର କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ଏ ଡ୍ରଇଂ ଟୁଲବାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ବି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ୟୁଏସ୍ବିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିରିଏଲ ବସ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିରିଏଲ ବସ୍। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ୟୁଏସ୍ବି ତ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ୟୁଏସ୍ବି କେବୁଲ୍ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ଲଗାଉଥାଉ, ଯେଉଁ କେବୁଲ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଏସ୍ବି କେବୁଲ୍ ବା ୟୁଏସ୍ବି ବୋଲି କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଏଲାଉ ଲ୍ୟାନ୍ ୟୁଜର ଟୁ ସେୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଲ୍ୟାନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଲ୍ୟାନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ତ କିଏ ତାମାନେ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କର ୟୁଜରକୁ ଏଲାଉ କରିଥାଏ ସେୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଟାଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫାଇଲ୍ ସର୍ଭର। ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଅଛି। ଲ୍ୟାନ୍ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ୱାନ୍ ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ପାନ୍ ପର୍ସନାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ମେନ୍ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ଫୋଟନ୍ ଇଜ୍। ଫୋଟୋର ତାମାନେ ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ, ଫୋଟନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆମର ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁଟା 1950 ମସିହାରେ କ'ଣ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦି ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍ ୱାଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ବାଇ। ଆମର ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍ କିଏ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଡଗଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲବଟ୍। ଆମର ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍କୁ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଠି ଭଳିଆ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍, ଗୋଟେ କାଠରେ କ'ଣ ଲଗେଇକରି ସେଇଟା ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲା। ତ ଡଗଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲବଟ୍ କ'ଣ ସେ ମାଉସ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କର। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଏନ୍ ଇମେଲ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଇନବକ୍ସ ସର୍ଭର ଏଜ୍। ଦେଖ ତୁମ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଇନବକ୍ସ ଅଛି, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତ ଯେଉଁ ଇମେଲରେ ଆମର ଇନବକ୍ସ ଅଛି ତାର କାମ କ'ଣ, ତ ଇନବକ୍ସର କାମ ହେଉଛି ରିସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଂ ଇନକମିଂ ଇମେଲ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମର ମୋବାଇଲକୁ ଯେତେ ବି ଆମର ଇମେଲ୍ ଆସିଲା ସେଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବ ଏବଂ ଷ୍ଟୋର୍ ସେ ଇନବକ୍ସରେ, ଯଦି ଇନବକ୍ସକୁ ଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯେତେ ବି ତୁମର ଇମେଲ୍ ଆସିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଇନବକ୍ସର କାମ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର 25ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସବୁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠାରେ ଅଛି, ସବୁ ଚାପ୍ଟରରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ପୁରା ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର। ତ ଆମେ ବହୁତଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଯଦି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର।